Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hoping all of you are fine, all of you are safe and sound and availing the opportunity of getting further studies through your online classes. Well beta, let us start our today's lesson. You know that we are reading our third lesson from book 2, that is Why Boys Fail in a College. Well, we see that the author, the writer has enumerated different reasons for the failure of students for the failure of boys particularly in college. He says that there are two types or two categories of the students who fail generally in an institution. The students who try and the students who do not try at all. The students who try, basically they remain non-serious regarding their studies till end, so that is why they seldom succeed, rather they fail. Similarly, the students who do not try at all, who remain sluggish throughout the session, who do not pay attention towards their studies, so ultimately they have to face failure. Similarly, we see that the writer has told us about a type of a student who fails. Basically, he is a nervous student, he is a restless student by nature, and when he sits on a desk, at a desk to study something, he gets involved in certain different activities and ignores his studies, so which resultantly becomes the cause of his failure. So what is the remedy for such student? Such student has to develop a sort of tranquility, a calmness, or a poise to control his this nervous habit. Then we see that the writer discusses with us another type of student, or another cause of the failure of students, you can say. Another cause for the another cause of the failure of a student is the wrong decisions, the wrong selection of subjects or profession or field by the parents for their son. And when the son finds least interest in that field, that particular field, so automatically he fails. He does not show any sort of interest in that particular field which is recommended by his parents. So what is the solution, what is the remedy to come out of this situation? The writer says that the parents should not impose their own will on their son, rather the son should be at liberty to make selection of the subjects or the field he would like to go in future. Then we see there is another type of student who fails in a college, who is not able to go through the examination, and he is basically a bright boy, he is an intelligent boy, but unfortunately he develops a sort of attitude that out of little efforts he would be able to go through the examinations in college as he used to do while he was in his school. So this attitude is again not recommendable, or that is not good indeed, because when you go to higher studies, when you go to higher grades, definitely you have to work really harder. So if you pay little attention towards your studies, so it will pay you nothing in the end, and you may fail. Then he says that what is the remedy for such students? He says that a bright student, rather he says that we, the people in the surrounding of that particular student, can see the situation, but the boy himself will have to rectify his ways. He will have to change his attitude and behavior. He will have to develop a set of habits which could make him realize that what is the importance of studies and how much time is required to be devoted for studies when you are in higher grades. तो ये चीज़ें हमने जब इस लेसन को स्टार्ट किया तो उसकी जो फर्स्ट पेज पे और तकरीबन एक पैराग्राफ हमने नेक्स्ट पेज में पढ़ा था, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि बच्चों के फेल होने के असबाब जो हैं नुमाया तौर पर, बुनियादी तौर पर क्या क्या हो सकते हैं। उसमें आपने पढ़ लिया नंबर 1 नर्वस हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर 2 रॉन्ग और मिस्टेकन एम्बिशन of the parents or wrong selection of subjects or field by the parents for their
sons. Then we see the bright boy who is very overconfident indeed, who depends on his abilities and doesn't do at all in reality. तो ये हमने कैटेगरीज पढ़ी थी. आज we will in today's lesson we will see further कि what more types of the students or the failure cases are brought to light through this लेसन. हम मज़ीद देखते हैं कि बच्चों के कॉलेज में लड़कों के फेल होने के जो असबाब बयान किए गए हैं उनमें और किन किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है. बेटा टू फैसिलिटेट यू आई हैव रिटन दिस डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन दिस बोर्ड, तो यू कैन पिक देम ऑल्सो. ठीक है जनाब, मैं आपको पढ़ाने के दौरान जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो आपसे डिस्कस होंगे और ताकि सिनोनिम्स आपके तैयार हो सके और बोर्ड के ऊपर भी आप निगाह रखिएगा और यहाँ से भी आप इन वर्ड्स को पिक कर लेते हैं. इन वर्ड्स को हम गो थ्रू कर लेंगे. जी, आपका फर्स्ट पैराग्राफ है आप का लेसन नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज एंड पेज नंबर इज़ 9, पेज नंबर 9. तो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज ऑलवेज वन ऑफ द रीज़न फॉर फेलियर. तो वी कम टू नो another reason for the failure of a student, for the failure of a boy in college, and that is the poor physical and mental health. तो हमें एक और रीज़न जो है हमारे सामने लाई गई है जो बच्चों के फेल होने का सबब बनती है, और वो क्या है कि उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत जो है उसका बेहतर ना होना, ये भी फेल होने का एक सबब बन सकती है. इफ़ एन adequate health service is available in the college. Adequate mean appropriate, proper, मौजू, मुनासिब. Health service here means health aid, तिबी खिदमात, सहूलत is available in college, and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of such failures can be avoided. Immense mean enormous, huge, बहुत बड़ी तादाद. Avoided mean averted. So we see that the writer is of the opinion that if there is an adequate, there is appropriate, there is a proper health aid or health service available in a college, or if there is a sort of cooperation between the college staff and the doctor, the college doctor, so such cases can be avoided, such cases can be avoided. तो हमें क्या कहना चाह रहा है राइटर कि अगर कॉलेज के डॉक्टर और कॉलेज, एक तो नंबर 1 तो ये है कि कॉलेज में एक प्रॉपर हेल्थ सर्विस मौजूद होनी चाहिए ताकि बच्चों का वक्तन फ़वक्तन जो है उनका मुआयना करवाया जा सके. नंबर 2 जो कॉलेज स्टाफ है उसमें और कॉलेज के डॉक्टर में एक कॉपरेशन होना चाहिए ताकि ऐसे तमाम बच्चे जो किसी वजह से अपने काम को बेहतर तौर पे सरअंजाम नहीं दे रहे, when their performance is not satisfactory as far as their studies is concerned, so these cases should be brought into the notice of college doctor on immediate basis. तो ऐसे तमाम मामला जो है फौरी तौर पर कॉलेज के डॉक्टर के सामने लाने चाहिए ताकि वो सही डायग्नोसिस हमें दे सके और सही उस डिसीज़ को क्योर किया जा सके जिसका वो बच्चा शिकार हो सकता है. तो देयर मस्ट बी a sort of cooperation between the teaching staff and also the doctor of the college. Well beta, कहा गया कि if we do so an immense number of failure can be avoided or avoided. अगर ऐसा हो जाए तो एक बड़ी तादाद में फेल होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका बचाव मुमकिन हो सकता है. What is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, the parent and the college authorities. So in this way, not only the boy himself but his parents and the college authority can come to know the real reason behind the poor performance of the student ऑफ दैट स्टूडेंट. तो इस तरह से क्या होगा कि ना सिर्फ वो बच्चा जो है आगाह हो जाएगा कि मेरा रियल मसला क्या है, लैक ऑफ सीरियसनेस जो है पढ़ाई में, इनअटेंटिव होने का या इनअटेंटिव होने का सबब बेसिकली क्या था ये उसे पता चल जाएगा. नंबर 2, उसके पेरेंट्स को भी अवेयरनेस हो जाएगी, आगाही हो जाएगी और कॉलेज अथॉरिटीज़ जो हैं उनको भी पता चल जाएगा कि बेसिक रीज़न क्या हुई है कि बच्चा जो है उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो हमें नज़र आता है, लैक ऑफ सीरियसनेस नज़र आती है और वह इनअटेंटिव
अटेंटिव रहता है क्लास में, उसकी रीज़न क्या है कि ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस विच आर हिंडरिंग हिज गुड परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। इन द केस ऑफ poor academic work, the reason for which is not apparent. Apparent mean obvious, clearly seen. It is my custom in habit, always to ask, habit or tradition, to ask the student to undergo a thorough physical examination. Thorough means complete. The writer, he shares his own experience in this regard. He says, whenever I find such a student for whom we find no obvious reason of failure, so I definitely ask him to go at once for his thorough medical examination कि कोई ऐसा बच्चा जो लगातार पढ़ाई में नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा हो और बज़ाहिर जिसकी कोई रीज़न, कोई वजह जो है वो दिखाई नहीं दे रही हो, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, राइटर कहता है कि मैं एट वंस उसको ये रिकमेंड करता हूँ कि यू हैव टू गो फॉर थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन इमीडिएट बेसिस, कि तुम्हें फौरी तौर पर अपना तिबी मुआयना जो है वो करवा लेना चाहिए। जी बेटे, ये उम्मीद है आपको चीज़ें साथ साथ समझ में आ रही हैं। ये एक और रीजंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जी बेटा, इट इज़ सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग मीन्स एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, कोई चीज़ जो कि ताजुब का बाइस है, हैरतज़दगी का बाइस है, टू फाइंड आउट and how large a percentage of such cases the university physician mean doctor, general doctor, finds an adequate reason, adequate proper for the difficulty. तो क्या कहा गया है कि it's really surprising, that is something astonishing, that how in a large number the college physician has brought certain cases before us where we explored, located the real reason behind the lack of concentration of that particular student। क्या हमें बड़ी हैरानगी हुई है कि एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी परसेंटेज के साथ डॉक्टर किस तरह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को सामने लाया गया है और जिनकी रीज़न सामने भी आ गई, जिनके लिए ये रीज़न भी सामने जिनके मुतालिक आ गई है कि उनकी पढ़ाई में नाकिस कारकर्दगी का सबब किसी न किसी तरह की बीमारी में मुब्तला होना था। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस। Tuberculosis basically an infectious disease causing or affecting the human lungs। ह्यूमन लंग्स को, इसको टीबी भी कहा जाता है और ये लंग्स पे असरअंदाज होती है, ये एक बीमारी है। बैड टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या हैं? टॉन्सिल्स बेसिकली आर द फ्लैशी पैड्स ऑन बोथ साइड्स एट द एंड ऑफ और एट द बैक ऑफ थ्रोट। तो बैड टॉन्सिल्स का मतलब क्या होगा? स्वॉलन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स हो जाना, गले की गदूदें जो हैं उनका फूल जाना, सूज जाना, ये भी एक बीमारी ही है। जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमें जो डिसीज़ जो है जिसके बारे में आगाह किया जा रहा है वो देख लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या? स्लीपिंग सिकनेस इज़ अ डिसीज़ कॉज बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। ठीक है जी। पुअर डाइजेशन। Poor digestion mean stomach disorder. Various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light. Brought to light mean disclosed, highlighted by the doctor. So which different diseases the doctors has highlighted, which the doctors have brought to light. कौन कौन से डिसीज़ हैं जो डॉक्टर्स जो हैं इस एग्जामिनेशन के बाद, बच्चों के एग्जामिनेशन के बाद कौन सी बीमारियां जो है मंजरे आम पे आई हैं? These diseases basically include tuberculosis, sleeping sickness, tonsils and stomach disorder, and all these diseases have been brought to light due to the effort of the physician or the doctor. During the past few months, to the unspeakable mean here undescribable, inexpressible. Relief mean comfort, satisfaction of the student and enlightenment of the faculty. Enlightenment mean awareness, knowledge. Faculty mean teaching staff. So all these things have provided a sort of inexpressible, undescribable relief and comfort to the students, and also these things have brought
brought a sort of awareness in the teaching members or you can say in the faculty. तो ये तमाम चीज़ें, तमाम केसेस जब डॉक्टर्स की मदद से मंजर आम पर आए हैं तो इससे बच्चे को बहुत कंफर्ट मिला है। जब उसकी बीमारी का डायग्नोसिस आ गया और जब उसको प्रॉपर क्योर मिल गया तो उसको रिलीफ मिल गया बच्चे को। इसके साथ साथ स्टाफ में भी, कॉलेज स्टाफ में भी एक अवेयरनेस डेवलप हुई है कि द पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट द स्टडीज़ ऑफ अ स्टूडेंट, कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं, बीमार हैं, तो ये चीज़ आप दैट इज़ गोइंग टू हिंडर योर गुड परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। तो तालीम में अच्छी कारकर्दगी जो है उसकी राह में ये बीमारी जो है रुकावट का सबब बन सकती है। जी बेटे, इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें मज़ीद बताया जा रहा है ओकेजनली। बेटे थोड़ी सी जो हम लोग वर्ड्स जितना हमने पढ़ा अभी तक वो वर्ड्स आपसे डिस्कस हुए पढ़ने के दौरान, यहाँ बोर्ड पे भी एक निगाह डालते हैं और इन वर्ड्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं। आपके पास बेटे वर्ड्स आते हैं। जी बेटे, वर्ड्स है एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन प्रॉपर, सेटिस्फैक्ट्री, सफिशेंट, काफ़ी, मुनासिब, तसल्ली बख्श। एवॉइडेड मीन एवर्टेड। एवर्टेड का मतलब बाज रहना, बचे रहना, दूर रहना। कॉलेज अथॉरिटीज़, कॉलेज मैनेजमेंट है, कॉलेज का इंतज़ामिया, कॉलेज की इंतज़ामिया और कॉलेज का अमला जो है वो कहलाएगा कॉलेज अथॉरिटीज़ या अमला होगा। अपेरेंट मीन्स क्लियरली सीन, ऑब्वियस, बिल्कुल कोई चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आने वाली चीज़ को हम कहेंगे। कस्टम, कस्टम मीन्स ट्रेडिशन और इट कैन बी अ हैबिट, कोई रवायत, कोई हैबिट। थॉरो मीन कंप्लीट, मुकम्मल। ब्रॉट टू लाइट मीन हाईलाइटेड, डिस्क्लोज्ड मीन्स कि मंजर आम पे लाना, आश्कार करना, आया करना। अनस्पीकेबल, अनडिस्क्राइबेबल एंड एक्सप्रेसिबल, वो चीज़ जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते और वो चीज़ जिसे हम बयान नहीं कर सकते। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मीन नॉलेज, अवेयरनेस, इंसाइट, यानी एनलाइटमेंट आपके फहम, अदराक और बसीरत को कहा जाएगा, बसीरत को कहा जाएगा। जी बेटे, नेक्स्ट वर्ड इज़ फैकल्टी। फैकल्टी मीन टीचिंग स्टाफ, यानी वो तमाम तदरीसी अमला जो आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी रखता है। जी बेटे, यहाँ तक हमने पढ़ा अभी तक और नेक्स्ट चीज़ें जो है उनको अब कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ओकेजनली। ओकेजनली मीन समटाइम्स, रेयर, कभी कभार। One meet an old-fashioned persons like the father who told me a few months. Old-fashioned mean outdated, outdated orthodox. दकियानूसी ख्यालात, पुराने ख्यालात, फरसूदा ख्यालात रखने वाला शख्स। तो occasionally one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago, although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. Consent mean होता है to give approval. Give approval mean रजामंदी जाहिर करना, इजाज़त देना। तो we see that the writer is sharing his own experiences in this context. इस हवाले से वो अपने कुछ experiences आपसे शेयर कर रहा है कि sometimes we come across certain people, certain parents who are orthodox, who are having traditional views or outdated, who are having old आइडियाज़। बाज़ दफ़ा किसी पुराने ख्यालात के हामिल वालदैन से भी साबका पड़ता है एंड देयर रिस्पॉन्स इज़ नॉट दैट गुड और पॉजिटिव एज़ फार एज़ द स्टडी, एज़ फार एज़ द हेल्थ ऑफ देयर सन इज़ कंसर्न्ड। जैसे वो हमें एक अपना तजुर्बा जो है वो बयान कर रहा है कि आई हैपन टू मीट अ फादर अ फ्यू मंथ्स बैक, और फादर को क्या बताया गया कि बिकॉज हिज सन ही वॉज हैविंग टॉन्सिल्स एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट एलमेंट, तो दैट इज़ वाई कॉलेज wanted to help the parents in operating the tonsils without expenses or without any burden on the parents. But the father said that he would never ever give permission for that operation. यानी राइटर हमें ये बता रहा है कि एक दफ़ा एक फ़ादर जो है उनसे कहा गया कि आपके बच्चे को चूँकि टॉन्सिल्स का मसला है और टॉन्सिल्स की वजह से शायद वो इस प्रॉब्लम की वजह से इन स्वोलन ग्लैंड्स की वजह से वो प्रॉपर एप्लीकेशन उसकी पढ़ाई में नज़र नहीं आती है, प्रॉपर उसकी अटेंशन दिखाई नहीं देती है, तो कॉलेज की तरफ से उसकी ऑपरेशन का बंदोबस्त किया गया है विदाउट एक्सपेंसेस ऑन यू, और अखराजात जो हैं वो आपको इसके बर्दाश्त नहीं करना पड़ेंगे। तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द पेरेंट्स, और फादर का
जो है रिस्पॉन्स क्या था उसके जवाब में? फादर ने कहा कि वुड नेवर एवर गिव कंसेंट फॉर दैट, कि वो इस काम के लिए इस टॉन्सिल्स रिमूवल के लिए इजाज़त नहीं देंगे. ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव परमिशन फॉर द रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स फ्रॉम द थ्रोट ऑफ his son. So that is sometimes the attitude of the parents. Okay. Further the father told, मज़ीद क्या बताया गया? He exhorted mean insisted that Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose, that there is some positive reason for that is why God has put those tonsils in that boy. तो फादर ने क्या इंसिस्ट किया कि अल्लाह ताला ने किसी गुड पर्पस के लिए ही वो बेटे के गले में ये टॉन्सिल्स जो है वो रखे हैं. तो दैट इज़ वाई ही डजंट वांट टू गिव एनी परमिशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द टॉन्सिल्स इन द थ्रोट ऑफ द सन. तो सच इज़ द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स समटाइम्स. जी बेटा, नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि एंड ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल. स्टैंड फॉर मीन टू सपोर्ट. The same thing, that father did not agree to consent to give permission for the removal of the tonsils. Since the boy was absorbing means getting in. He was getting in, or he was taking in, or he was digesting too much poison to permit proper application. Proper application means proper concentration to the college work. We had to ask him to go home. तो क्या है, resultantly as the father was not giving any permission for the operation of those tonsils, so that is why the college staff had to face the problem that the boy was not focusing or he was not properly concentrating on his work or studies. So ultimately the college authority had to ask the boy to go home and to rest till he recovers. तो एंड में क्या हुआ, राइटर कहता है कि चूंकि फादर हमारी बात को अग्री नहीं कर रहे थे और बच्चा बहुत ज़्यादा पॉइजन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा था और इसकी वजह से उसमें सुस्ती थी, उसमें नकाहत थी और उसमें ऐसे सिम्टम्स नज़र आती थी जिसकी वजह से स्टडीज़ में लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है. लिहाजा उस बच्चे के हवाले से पेरेंट्स को ये इंटीमेशन दिया गया, उनको ये तला दी गई कि बच्चा जो है वो घर रेस्ट करे जब तक वो बेहतर नहीं हो जाता, बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क वेल ओवर देयर. ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर मीन अनयूजुअल, बहुत शाज़, बहुत कम होने के बराबर, इनफ्रीक्वेंट ना होने के बराबर. बट इट इज़ नेसेसरी. क्या कहा जा रहा है कि सच केसेस आर बेसिकली रेयर और अनयूजुअल, बहुत कम ही ऐसे केसेस नज़र आते हैं, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट्स डेफिनेटली कोऑपरेट. वेल बेटा, बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड. कॉन्स्टेंटली मीन क्या होगा, रेगुलरली in mind the simple fact that there is no substitute for health. Substitute mean alternative. Yes, that is the key point of the paragraph, that we have to keep in our this fact in our mind, that there is no alternative for good health, because you know that health is wealth. When one is healthy, he takes pleasure in talking, in walking, in eating, and in performing different tasks of life, or he loves to get involved in different activities of life positively. Whereas when one is surrounded by diseases, he realizes the true value of health. So that is why we must give importance to health first. The health should be on top priority. तो सेहत जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई चीज़ सेहत की मुतबादिल नहीं हो सकती है जी. And that however such a man may know it is not of much value, value mean worth, significance, unless he possesses the physical, possesses mean to keep, the physical vigor, vigor means strength, to bring it to bear mean to face, to counter, to apply on the world's problems. So we are being told about another very important thing, that is that unless and that a person might be having too much knowledge or theoretical knowledge, but unless and until he possesses a vigor or strength to cope with the situation or to tackle the problems of life, how would he be able to counter or to face
द वर्ल्ड इन द रियल सेंस, कि इंसान की बज़ाहिर जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज इंसान के पास मौजूद है, जब तक फिज़िकली भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो दुनिया में दरपेश आने वाले जो तमाम मसाइल हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको कैसे फेस करेगा, उन जो दुनिया में आने वाले जो मसाइल हैं उनको टैकल किस तरह से कर सकेगा। तो ही मस्ट कीप अ हेल्दी बॉडी, और ही मस्ट बी विगरस, or he must having that vigor to handle to cope with the situations which are likely to be faced by him in this world। ठीक है जी। तो फिज़िकल हेल्थ जो है और मेंटल हेल्थ, इट होल्ड्स अ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। जी बेटे, ये आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है और यहाँ पर हम देख लेते हैं इससे मुतल्लिका जितने वर्ड्स भी अभी तक आए हैं उसको मज़ीद देखते हैं। ओकेजनली मीन समटाइम्स, कभी कभार। ओल्ड फैशन मीन ऑर्थोडॉक्स, आउटडेटेड, दकियानूसी, पुराने ख्यालात रखने वाला। एक्सपेंस होते हैं अखराजात, एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। कंसेंट मीन अप्रूवल, परमिशन, इजाज़त को कहा जाएगा। एक्सर्टेड, इंसिस्टेड मीन्स इसरार करना, कोई चीज़ पुरजोर तरीके से कहना। स्टैंड फॉर मीन्स सपोर्ट, सपोर्ट क्या होगा, साथ देना, सहारा देना, साथ खड़े होना। रेयर मीन अनयूजुअल, इनफ्रीक्वेंट, शाज़ और नादिर, कभी कभार होने वाला वाक़या। कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, मुस्तक़लन, कॉन्स्टेंटली। सब्स्टिट्यूट मीन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मीन क्या होगा, मुतबादिल, किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज वैल्यू मीन वर्थ, एंड वर्थ मीन सिग्निफिकेंस, अहमियत, किसी चीज़ की अहमियत। पोजेस मीन टू कीप यानी रखना, टू हैव। विगर मीन स्ट्रेंथ, पावर, इसको ताकत कहा जाएगा। जी बेटे, यहाँ तक वर्ड्स जो है, yes, another word was also the part of this paragraph. To bring to bear mean to apply, to face, to counter, सामना करना, फेस करना, किसी चीज़ को, सिचुएशन को काउंटर करना, उसका सामना करना। जी बेटे, यहाँ तक आपने ये सारे मीनिंग आप कर लिए। मज़ीद पढ़ते हैं और साथ साथ इन मीनिंग्स को भी डिस्कस करते हैं। जी बेटे, आपके पास अब नेक्स्ट पैराग्राफ है। Nowadays when most ambitious boys, ambitious mean aspiring, the boy is having high aims or goals or objectives in life. It also means passionate. Boys who want to go to college, the financial pressure is a very serious one. So we are being told about another cause, a serious one, for the failure of a student, and that is the financial pressure or the financial crisis. So we see that we find many such cases in our surroundings. When a boy is interested to go for further studies, when we find him ambitious or passionate to study further and to achieve the goals of life, but unfortunately or unluckily his poor family background or his financial problems hinder the way to continue his studies. कि बाद जब हम देखते हैं कि बहुत एम्बिशियस, हमें बहुत इंटेलिजेंट और बड़े एबल स्टूडेंट्स जो है नज़र आते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, लेकिन अपने घरेलू माली मसाइल की वजह से वो अपनी तालीम जारी रखना जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ द सीरियस वन फॉर सच स्टूडेंट्स हु वांट टू कंटिन्यू देयर स्टडीज बट दे कैन नॉट। A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. For the good of his soul mean to benefit him, फ़ायदा उठाने के लिए। तो some parents, they just develop a sort of attitude that the boy should earn money, that he has to earn money to pay his college fee and to get his stationery and food and all the things. तो कुछ पेरेंट्स ये एटीट्यूड इख्तियार करते हैं कि बच्चे को ये पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के दौरान जो है वो कमाना भी चाहिए, उसको अर्निंग भी करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो टू शेयर द बर्डन ऑफ हिज फैमिली, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पेरेंट्स का बर्डन शेयर करने के लिए भी उसे जो है वो कमाना चाहिए, अर्निंग करना चाहिए।
As a matter of fact, no boy ought to be compelled. Compelled means here, compelled, forced, किसी को मजबूर करना, to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. Avoided mean avoided बचना. तो क्या है कि as a matter of fact a student shouldn't be compelled, he shouldn't be forced to earn money to fulfill his expenditures or expenses during studies. Rather this should be avoided in best possible way. कि बच्चे को कभी भी पढ़ने के दौरान जो है वो मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अर्न करे और बर्डन शेयर करे अपनी फैमिली का. Not only does he get a mighty poor living by the process, but a mighty poor education as well. Mighty mean here quite. So here we see that if a boy who has to face financial pressure or crisis, if he is forced to do earning during his studies, so what is going to be the result? The result is that he would be getting a mighty poor living as well as the mighty poor education. उसकी जो education का standard है वो भी बेहतर नहीं होगा और he wouldn't be able to keep balance in his between his job and his studies, कि वो अपने studies और job में balance रखने में कामयाब नहीं हो पाएगा. तो क्या होगा, उसकी mighty poor education है. Similarly he would be having mighty poor living and education and both, यानी उसकी standard जो है वो बहुत ही low हो जाएगा, living standard. जी बेटा, if the boy ought to go to the college at all, he ought to be trusted to make a good use of reasonable contribution from his parents. Reasonable mean appropriate, yani if the boy is interested to go to the college for higher studies, if he is having that potential and caliber to do something outstanding in life, so the parents must contribute a share from their side as far as the studies or the studies expenditures of the student is concerned. कि parents को बच्चे की तालीम में बहरहाल एक मुनासिब जो है वो इखराजात जो हैं उसके हवाले से अपना शेयर डालना है. एनी पेरेंट्स ओव्स दिस. ओव्स मीन होता है रिस्पॉन्सिबल, इंडेप्टेड, टू हैव एन ऑब्लिगेशन, दिस मस्ट टू हिज सन, यानी दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स. उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे की जो पढ़ाई है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन उनको पहुंचाएं. द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हियर. The boy himself did not ask his parents to bring him in this world, and they are responsible for his being here. So that is why they have to share the burden of the education of their child. And consequently mean resultantly, they have the responsibility for giving him the best equipments. Equipments mean tools possible to meet the world's problems, and the best possible tool the parents can provide to their sons or to their children to tackle or to handle the problems of the world is just education. It is just through education that they can reach to a place of respect, to a place where they might be having not only respect but earning and fame at the same time. तो एक माशरे में एक बेहतरीन मकाम हासिल करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ जो दी जा सकती है पेरेंट्स की तरफ से वो तालीम और तरबियत, दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हैं. जी बेटे, इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं. इस पैराग्राफ में अब जितने वर्ड्स आपके सामने आते हैं, वी सी दैट एम्बिशियस मीन इंस्पायरिंग, पैशनेट मीन्स यानी अ पर्सन हु इज़ हैविंग हाई गोल्स एंड एम्स इन लाइफ, यानी आला मकासद रखने वाला शख्स. कंपेल्ड, फोर्स्ड, यानी किसी को फोर्स करना, किसी को मजबूर करना. रीजनेबल, अप्रोप्रिएट, मुनासिब. कंट्रीब्यूशन, शेयर, हिस्सा. ओज मीन इंडेप्टेड टू, हैव एन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी होना. कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्टेंटली, नतीजतन. इक्विपमेंट्स मीन टूल्स, हथियार, औजार. डेट्रीमेंट मीन डैमेज, लॉस, इंजरी, नुकसान को कहा जाएगा. हार्ट रेंडिंग. हार्ट रेंडिंग मीन्स वेरी पेनफुल. Rather we discussed only these words in today's paragraphs. The rest of the words we will do in our next lecture. Fine, because your time is about to end. Beta, and that's all for today's lecture. And before
ending it, I would share today's message, a short message. All of you know that hard work is the key to success, and hard work never goes unrewarded. If you remain sluggish, if you remain idle, you would never ever be able to get something worthy in your life. It is just waste of time. Whereas if you put your best effort to get your tasks of life accomplished, if you work really harder, so you will reach to the height of glory, and you would be able to raise to get a very reasonable, appropriate status in your society. ठीक है बेटे, thank you very much for being with us. Seeing you in the very next lecture, inshallah.